Yeah, so now what we are going to do is we are going to take a look at the entire market scenario. Okay. And first, we will take a look from the market dashboard because market dashboard is very critical for understanding what the market is trying to do. Yeah, yeah. So now, first of all, when you're taking a look at this market scenario, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि we have to look at the who is in control, right? This is what I have been talking about in every video where we are meeting, right? कि who is in control. तो जब भी आप इस market scenario को देख रहे हो, so this is a scenario where the bulls are neutral. This is a scenario where the bears are neutral. और ये सिनारियो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिनारियो जो है हमें ट्रैक करने के लिए. So we are going to be tracking this particular scenario, and we are going to be taking a look at how the market is moving about. So now when you take a look at the kind of market momentum which is there, so यहाँ से हमें लग रहा है कि the market is now once again headed to the downside, correct? So now market is showing not much of activity here. And when you take a look at the overall market condition, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है. एंड हल्का सा आईटी में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, फार्मा में पॉजिटिव ट्रेंड है, और एक मीडिया में है. बट देन आईटी फार्मा इज हैविंग मोर कैंडिडेट्स. And overall, there is some bit of bearishness here and some bit of positivity, but bearishness is definitely more than the positive side. So considering all that scenario, okay, so we have got a picture of that scenario. So अभी इसे लेकर चलेंगे, and we will now get inside and we will see what is the overall situation. So now when I take a look here, I see that there are many stocks that are positive, and at the same time I can see that there are few stocks that are negative. So yes, while there is negativity here, so this particular page in NeoTrader, okay, this particular page in NeoTrader gives you an idea of what is the kind of trend that is in play. Okay, it gives you an idea of what is the kind of trend that is in play on a 30-minute chart if you are an intraday player, on a 60-minute chart if you are a multi-day player. So now in this particular high probability setups, I can see that there are more bullish candidates here. So yes, while market is not showing me much of bullishness, I would still wait and watch. Okay, I would still wait and watch because yes, the market has rallied by around 1,000 points from the low. So now I will definitely wait here and find out how to handle this situation. Jan 27 लो के बाद एक अच्छी movement आई है, and now RBI policy which everyone is waiting for is due tomorrow. So considering all of that, I will wait and watch and see what I need to do next. Now when I come in and take a look at the stocks, I can see here दैट फार्मा के नाम ज्यादा है. तो जाहिर है कि फार्मा में मोमेंटम है, तो फार्मा के स्टॉक्स पर मैं कंसंट्रेट करूंगा. एंड नाउ व्हेन आई टेक अ लुक एट द ओवरऑल मार्केट सिचुएशन, आई गॉट टू फाइंड आउट व्हाट really I need to do to take action. So in our earlier sessions, right? So this is session number 3 on price action. So now in 1 and 2, we had seen how to find support resistance, right? Using the candlestick patterns. Then we had seen using Bollinger Bands. और अब इस सेशन में हम देखेंगे about a concept called as Camarilla Pivots. Okay, so Camarilla Pivots are going to be very, very critical, and that is going to be a important thing to watch out for. So now when you're going to take a look at Cambria pivots and when you're going to take a look at the overall market scenario, so what you need to see is we need to see if the momentum is going to shift, okay, to which side. So Cambria pivot is very powerful, and it tells you exactly what kind of action is happening. राइट. पिवट क्या है? पिवट एक मीन रिवर्टिंग सिस्टम है. यानी पिवट में जब भी आप काम करेंगे, सो पिवट इज अ मीन रिवर्शनरी सिस्टम. यानी
What is a mean? Mean is the average of a traded price. Okay, mean is the average of a traded price. और उस एवरेज ऑफ अ ट्रेडेड प्राइस में हम कोशिश करेंगे कि कैसे एक मोमेंटम निकाले. सो नाउ द होल आइडिया इज हाउ कैन वी टेक अ लुक एट द मार्केट सिनेरियो, हाउ कैन वी टेक अ लुक एट द मार्केट सिनेरियो एंड फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट एक्शन टू टेक प्लेस. सो नाउ कैमरे उसमें बहुत सारे पिवट्स है एंड बहुत सारे पिवट्स में से हमने कैमरा पिवट को चुना है क्योंकि बेस्ड ऑन दी स्टडीज ऑफ फ्रैंकलिन ओचोआ उसको हमने इंकॉर्पोरेट किया है हमारे रीडिंग में. एंड आवर फाउंडर डॉक्टर नारायण हैज टेकन दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ पिवटिंग टू अ ग्रेट न्यू लेवल. सो टुडे इन दिस एडिशन ऑफ आवर लाइव स्ट्रीम वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट कैमरा पिवट्स नाउ फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव. आगे वाले सेशंस में हम ऐसे ऐसे ही कंसेप्ट को हम कैसे इंट्राडे में कर सकते हैं, कैसे मल्टीडे में कर सकते हैं, कैसे ऑप्शंस में कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के हम लोग सेशंस करने वाले हैं. तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तुरंत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहेंगे वेयर वी शो यू हाउ टू मैरी टेक्नोलॉजी एंड हाउ टू मैरी टेक्निकल एनालिसिस एंड एंश्योर दैट यू आर ट्रेडिंग इन अ स्मार्टर वे. क्योंकि नियो ट्रेडर का एक ही मकसद है, अब स्मार्ट ट्रेडिंग होगा इजी, राइट. सबको स्मार्ट ट्रेडिंग करना है लेकिन जानते नहीं है कि स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे करे या पता नहीं है कि कहाँ से स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो ये दोनों चीज का मिलन होता है इन न्यू ट्रेडर एंड आई वांट यू टू बी part of the neo trader ecosystem. Find out what we do, how we do it, and if you're already a neo trader subscriber, then fantastic, you have taken the best decision of your life, because neo trader is an experience, right? Like how when you buy an iPhone is an experience, correct? In the mobile phone तो सबके पास है, बट लेकिन जिसके पास आईफोन है उनका एक्सपीरियंस ही अलग है. तो उसी तरह अगर आपको भी चाहिए कि मार्केट का एक्सपीरियंस करने के लिए, इफ देर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प यू टू कनेक्ट विद द मार्केट, लुक एट द मार्केट, देन NeoTrader is the place you have to be. So now moving ahead on talking about all of these things. Okay, I've been talking about many things out here. So now I'm going to be talking about camera pivots. And let me just tell you first of all कि camera pivots दिखता कैसे है. Okay. So for example, अगर मैं एक चार्ट खोलूँ, right? So you can see here, this is a camera pivot, right? So आपके सामने ये एक कैमरा पिवट मैंने लगाया है यहाँ पे. So अक्सर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, okay, so there is something called as a restrictive zone as far as the pivots are concerned. So अलग अलग टाइप के पिवट्स है जैसे मैंने आपको कहा था. एंड कैमरा पिवट जो है, इट वाज डेवलप्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज निक स्कॉट. यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट इन माय अदर वीडियोस एज वेल, राइट. अदरवाइज इफ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल अबाउट कैमरा पिवट, यू कैन गो एंड विजिट आवर यूट्यूब चैनल. वहां पर काफी सारी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इट इज बेसिकली लेवल सेटिंग जोन. पिवट तो कंसेप्ट सेम है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, लेकिन उसके फॉर्मूलाज अलग अलग है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज दैट आर देयर on the pivoting approach. That is what sets every pivot apart. Now when you see here that I am talking about this particular stock torrent power. So यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर if you see, if it was oscillating between S3 and R3, तो S3 and R3 के भीतर जब भी एक स्टॉक रहता है, the chances of that stock to move is limited. But then the moment it is able to cross it, okay, the moment it is able to cross it, the chances of that stock to go higher increases. Okay, that is step number one. Now, what we have seen is that many times it goes up to R3 and then it crosses R4. So when the best situation, okay, the best situation is when it crosses R4. ये एक restricted situation है और R4 के आगे best situation है. तो हमने क्या किया है कि हमने in this neo trader, what we have done is we have a dedicated page called as the pivoting approach, and that pivoting approach मैं आपको बताऊंगा इज कॉल्ड एज अ कैमरा पिवट पेज, जहां पर हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरह यहाँ पर कंबाइन किया है और आपको बताया है कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स. सो नाउ फ्रॉम दिस यू नो एग्जैक्टली विच स्टॉक इज क्रॉसिंग H4, विच स्टॉक इज क्रॉसिंग L4. बट देन ये पेज जो है, ये पेज आपको बता रहा है कि कौन से स्टॉक्स H4 क्रॉस कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल पीईएल. ओके, नाउ अगर मैं पीईएल का चार्ट डालूं, देखिए यहाँ पे ये चार्ट डाला था H3 पर आकर रुक गया. ये पीईएल का जो मूवमेंट है, इट क्रॉस H4
और इसके आगे आपको एक तेजी का मूव मिला. Why? Because this level was a restrictive level. If you see on the previous day, it did not cross H4. और उसके पहले when it cross H4 या R4, high 4 या resistance 4, L4 या सपोर्ट 4. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम लेवल है, और जैसे ये क्रॉस होता है आपको मूवमेंट दिखता है. देन अगेन ऑन द नेक्स्ट डे इफ इट डजंट क्रॉस, यू डोंट सी द मूवमेंट. अगेन ऑन द नेक्स्ट डे अगेन इट क्रॉसेस, सो यू आर सीइंग द मूवमेंट. सो इट गोज टू शो दैट द H4 लेवल इज वेरी वेरी क्रिटिकल. और जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा आपको सक्सेस आना मुश्किल है. व्हाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक सो मेनी ट्रेड्स इन अ डे, राइट? वी वांट टू टेक फ्यू ट्रेड्स, और उस ट्रेड के साथ हमको काम करना है. तो एग्जैक्टली यहाँ पर जब भी मूवमेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में है कि मुझे पता कैसे चलेगा, राइट? सो वहां पर चले जाते हैं, राइट? सो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, और यहाँ से दिस इज बेस्ड ऑन द डेली. ओके, सो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दिस इज अ डेली पिवट. ऐसे आपका यहाँ पर वीकली पिवट बनेगा, मंथली पिवट बनेगा, सब कुछ बनेगा. एट द क्लिक ऑफ अ बटन न्यू ट्रेडर टेल्स यू हाउ टू लुक एट कैमरिया पिवट्स, राइट? जैसे कि मैंने कहा था और एक बार बता रहा हूँ, कैमरिया पिवट एक अप्रोच है सपोर्ट रेजिस्टेंस का. एवरीवन टॉक्स अबाउट डिमांड जोन, सप्लाई जोन. सो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टाइल, एडवांस वे ऑफ प्राइस एक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ऐसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ. सो डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to our channel and enjoy our enriching content. Now, this particular pivot approach which I'm talking about is on the daily pivot. Okay, डेली पिवट के बेसिस पे यहाँ पर आपको इंट्राडे के लिए काम किया जा रहा है. नाउ इफ आई जस्ट चेंज इट टू वीकली, ऑलराइट, सो वीकली में आपको दिखाई देगा कि अबाउट इंडिया इज क्रॉसिंग H6 बट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. तो यहाँ पर एक बहुत तेजी का मूव आ रहा है. सो नाउ इफ आई गो एंड पुट हियर अबाउट, ओके, ये अबाउट इंडिया का चार्ट है. ऑलराइट, ये अबाउट इंडिया का चार्ट है. तो यहाँ पर मैं इसको 30 मिनट कर देता हूँ. ऑलराइट, so आई विल मेक इट टू 30 मिनट्स. और यहाँ पर मैं अभी ये जो सेटिंग जो है, यू कैन सी हियर, दिस इज फॉर द एंटायर वीक. ओके, दिस इज फॉर द एंटायर वीक. तो ये पिवट है पूरा वीक का, और यहां से आप देख रहे हैं कि ये पूरा वीक का क्रॉस कर दिया, राइट? सो नाउ यू कैन सी हियर दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज, okay, from this particular page you will get to know which are the stocks that are crossing and that are crossing very very quickly. नाउ यहाँ पर अगर आपको चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज, राइट, यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन से स्टॉक में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, राइट? नाउ आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहे हैं. अभी आपको चाहिए कि ये स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये स्टॉक्स पे कहाँ पे मूवमेंट हो रहे हैं और इसके लेवल्स क्या हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सबके मन में. सो जब भी आपको लेवल जानना है, यू कैन गो टू द लेवल्स एंड यू कैन सी हियर बेस्ड ऑन द डेली पिवट. नाउ इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ अबाउट इंडिया, तो यहाँ पर मुझे लेवल्स मिल जाएंगे. यहाँ पर मुझे लेवल्स मिल जाएंगे एंड दिस विल हेल्प मी. सो नाउ ऑन एन इंट्राडे बेसिस अबाउट हैज क्रॉस्ड H4. ओके, सो यहाँ पर नीचे एक अंडरलाइन आ जाता है which says that about has crossed H4. So I have my target as H5 and H6. Correct? So this way we are able to guide you step by step. आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर से पूरा आपको मूवमेंट ट्रैक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एक्शन क्या है. यस, आई विल ऑल्सो टेक अप इन फ्यू मिनट्स योर स्टॉक, कि आपको कौन से स्टॉक में काम करना है, और एज पर कैमेरिया व्हाट इज योर स्टॉक सेटअप, आपके स्टॉक के क्या पोजीशन है वो भी हम डिस्कस जरूर करेंगे. स्टे ट्यून्ड, आपके स्टॉक रेडी रखिए एंड पुट इट ऑन द चैट बॉक्स फॉर श्योर. ओके, so now I will go into a page that is a master page in NeoTrader, and that master page is called as rolling ticker. Right? Some of you would have seen it because rolling ticker की सहायता मैं हर एक सेशन में लेता हूं, क्योंकि लाइव मार्केट में इफ आई हैव टू स्कैन सो मेनी स्टॉक्स, जो NSE 500 छोड़ो, FNO के लिए भी इफ आई हैव टू स्टॉक 225 स्टॉक्स रियल टाइम एंड फाइंड आउट across so many technical parameters what is happening on the ground, then it is very very difficult for me. So what I do, I invoke rolling ticker and I find out कि चलो मुझे बताओ कि कैमरिया में हालचाल क्या है.
So now when I click that, I can see here that these are the stocks that are showing me some movement. Now you can see here Deepak Nitrate. Deepak Nitrate में एक मोमेंटम हो रहा है, राइट. यू कैन सी हियर दीपक नाइट्रेट में मोमेंटम हो रहा है. इट इज क्रॉसिंग एन इंपॉर्टेंट लेवल. सो नाउ आई नो दैट राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग देयर इज अ मूवमेंट इन दीपक नाइट्रेट. तो चलो दीपक नाइट्रेट जाकर देख लेते हैं. नाउ आई विल अगेन ओके, no need to change it, it's on auto. So Deepak Nitrate, and I can see here that Deepak Nitrate is on a 5 minute chart, okay, not on a 30-minute chart, on a 5 minute. You can see here that Deepak Nitrate में एक मोमेंटम आया है और यहाँ से एक फ्रेश बाय का एक रिक्वेस्ट आया है. और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए, यू कैन सी हियर it didn't go up, and here it has gone up. So now compared to the previous 2 days, today I am getting an opportunity in Deepak Nitrate to trade on the long side, right? Chemical stocks चल रहे हैं, right? SRF चल रहा है, यूपीएल चल रहा है, जीएनएफसी चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं. नाउ दीपक नाइट्रेट इज आल्सो गेटिंग इनटू द एक्ट आफ्टर 2 days ऑफ सम कंसोलिडेशन. आज आपको एक R4 के ऊपर प्राइसेस जाता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट वाज कैप्चर्ड बाय न्यू ट्रेडर इन द रोलिंग टिकर. तो आपको पता है कि यहाँ से है. तो अभी अगर क्विकली, प्रॉब्लम क्या है पता है कि सबको चार्ट देखना पसंद है, but then you don't know what should I enter in the left hand side top column, right? So वो जो टॉप बॉक्स में जो सिंबल डालना है वो आपको पता नहीं है, एंड दैट इज द पावर ऑफ न्यू ट्रेडर, जो आपके और मार्केट के बीच का जो फासला है उसको कम कर देता है और एंड एंश्योर्स दैट यू आर एबल टू फाइंड द राइट सेट ऑफ स्टॉक. सो यू कैन सी हियर दैट दीपक नाइट्रेट हैज स्टार्टेड मूविंग. यहाँ से टारगेट बन रहा है. तो चलिए, अभी टारगेट बन रहा है, मैंने तो कह दिया. So now what kind of target can we look at? So let's go and take a look at it. Now for the target part, again, I will go to my Camarilla page. I will go to my levels page, and then I will go and type here Deepak Nitrate. So I'll go here and type here Deepak Nitrate, and I will be able to get the level. So my levels are 2823862405. So this way I can use my approaches. I can find out from here which stock is moving. Now you can see here there are some stocks that are going to the downside. Okay, stock का नाम है BSC. So अगर BSC में अगर मुझे शॉर्ट करना है, ओके, BSC में अगर मुझे शॉर्ट करना है, तो चलिए BSC का सेटअप देखते हैं कि BSC स्कोर 4 हो गया है, यानी इसमें एक मोमेंटम है टू द डाउन साइड. सो लेट्स पुट ऑन BSC. So this is the setup of BSC, and you can see here that BSC is headed down. So now BSC is headed down, वो भी हमको दिख गया. Now we can also see that Deepak Nitrate is headed up. So ऐसे आपको stocks यहाँ पर आ जाएंगे, and you will be able to get an idea. Now overall idea आपको यहाँ से आएगा. So as a market participant, you have to see where the wind is blowing, who is in control. And now when I take a look at the overall market condition, I find that yes, it is divided. यानी 50-50 चल रहा है. Neither very strongly bearish, neither very strongly bullish. But then looking at the kind of event that is going to come in tomorrow, okay, which is going to come on tomorrow. So अगर कल एक इवेंट है और उस इवेंट के पीछे काफी एक प्रॉमिस है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्यादा सेल ऑफ नहीं हो रहा है. एंड यू कैन सी हियर दैट द सेल्स आर रेस्ट्रिक्टेड. ज्यादा गिरावट भी नहीं है इन वेरी वेरी फ्यू स्टॉक्स. रिजल्ट ट्रिगर स्टॉक्स है. उसके अलावा द मार्केट इज वेरी म्यूटेड राइट नाउ. सो कंसिडरिंग दैट, वन शुड सी कि अगर छोटे मोटे आपको अगर ट्रिगर्स मिल जाए, स्टे ऑन द लॉन्ग साइड. एंड व्हेन यू वांट टू गो ऑन द लॉन्ग साइड, यहाँ पर सेक्टर्स अवेलेबल है आपके लिए. तो यहाँ से मार्केट का आपको रुझान मिल गया, सेक्टर का रुझान मिल गया. यहाँ पर क्या, हु इज इन कंट्रोल, कौन कंट्रोल में है, वो आपको पता चल गया. सो ऐसे नियो ट्रेडर कंटिन्यूज टू शो हाउ टू ट्रेड स्मार्ट प्राइस एक्शन स्मार्टली. क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडर सबको बनना है, बट देन प्राइस एक्शन में क्या देखना है,
कौन से टूल का उपयोग करना है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है ऑन अ डे टू डे बेसिस इज व्हाट आई एम कवरिंग एज पार्ट ऑफ माय लाइव स्ट्रीम. सो डू नॉट फॉरगेट to be a part of our YouTube channel. And if you liked what we really discussed, I think that you should definitely smash the like button, because me and my team deserve a like, because we want to bring a lot of interesting content to you, tell you about some good technical analysis tool जिसका research आप और कर सकते हैं on our YouTube channel and also within NeoTrader. So if you want to know, our team is also sharing with you the link, and below this video also there is a Google form available. If you want to come and explore NeoTrader, me and my team will be happy to share it with you, because like I said, so agar if you join this YouTube stream directly, we have a YouTube channel where we have got a lot of interesting content. Let me just show you. Okay. So if you just go to NeoTrader, you can just go to YouTube and just type NeoTrader, or if you just come here, you can just subscribe, right? On NeoTrader, right? So you can see that there are a lot of interesting contents that we are posting, and there are a lot of videos by our founder. Okay, there are a lot of videos by our founder that talks about various market scenarios. We talk about stocks, we talk about market scenario, we talk about various interesting aspects of new trader that helps you to become a smarter trader, to look at the markets, to look at the data points, and ensure that you are reading things the way it has to be read, right? Everyone can read the chart, but are you reading it in the way it has to be understood? I don't know. There are many kinds of tools available for trading, but you may be using some of them, but are you using it in the right way? Are you able to catch the right set of stocks? That is a question which you got to ask yourself. And that's where NeoTrader bridges that gap and tells you exactly how it has to be done. So that's what we do across our events, offline events, online events. We conduct various kinds of workshops, and I also do various kinds of programs. And our founder is constantly engaged in making NeoTrader the need or the solution for every trader's problem. So yes, we have a new trader for you, and this is how we are going to ensure that यहाँ से बहुत सारे content आ जाए. हमारे दूसरे वेबसाइट भी है cknarayan.com, वहां पर जाकर भी आप इंटरेस्टिंग कंटेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं. सो ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन कॉन्स्टेंटली विद द एम to make you a confident and profitable trader, right? If you're already part of the new trader ecosystem, very good, like I said. But then if you are not, then you should definitely come and check it out. So now again, coming back to Camarilla, let's see what are the other names that are popping up. So as of now, as we speak, we can see here that this is from the FNO space. Not only that, इसमें अगर आप mid and small cap में जाते हैं, okay. So now, as after the last refresh, Tata Chemical, okay, Tata Chemical has started moving. Tata Chemical is at score number 3, so which says that there is some movement here. So let's put on Tata Chemical, all right. So let's put on Tata Chemical, and Tata Chemical, you can see here there's a strong move. यहाँ से एक अच्छा तेजी बन रहा है. तो ये सिचुएशन को इवेल्युएट करता है न्यूनो ट्रेडर, और उसके बाद ही यहाँ पर मैसेज आता है. बहुत लोगों का क्या होगा कि ये सिचुएशन पे, राइट, ये सिचुएशन पे लोग डर जाते हैं और यहाँ से ट्रेड लेने के बाद एग्जिट हो जाते हैं. बट what happens is that new trader evaluates this. So for example, if you see here, so you can see here that new trader gives you a trade, right, only out here when it evaluates all these conditions. So there is a check inside. So एक टेक्निकल एनालिसिस रीडिंग है, और दूसरा कंसेप्ट है फिल्टर्स, टेक्निकल एनालिसिस फिल्टर्स, जो हमने नियो ट्रेडर में बिल्ड किया है. सो विद दैट वी आर एबल टू कंटेन false breakouts, yeah, false breakdowns, and that is what making neo trader a very very powerful way to look at the market. Okay. So as we discuss, as we speak along, if you got any kind of stocks, you can put your stocks on the chat box, and we'll be happy to answer them, right? So the whole idea is that market को कैसे read करना है. So you can see here GNFC, Coromandel, Deepak Nitrate. So chemicals and chemical stocks and the pharma stocks, they are the one leading from the front at the moment. So ये सारे stocks में काफी मजबूती है. So that should be the main agenda for now. As of now, we are not seeing any other kind of movement here. So right now, even if you go to stocks, some stocks that are showing some traction,
we can see that there is limited action being seen here. So we'll continue to hold on to the bullish bias. Bearish bias hai, lekin bearish bias, they are not giving us much follow through. So yes, today's market scenario is a scenario where you should be trading on the light side ahead of the event. Now, once the event is done, इवेंट इज बिहाइंड अस, क्या टाइप के ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो सब हम लोग इवेल्युएट करेंगे एंड वील चेक आउट इन आवर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम. So till we meet again and till we discuss more about these kind of concepts and find out how to link these concepts into our trading. Thank you so much for watching. This is Radha Venkatraman signing off. Have a good day.